श्री हिमालयराज कृत शैलपुत्री स्तोत्रम्। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम्। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम्। छिन्दी हृत संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धौ कृतशेखरम् त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकम् भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम् द्वीपीचर्माम्बरधरम् नागेन्द्रौतुतभूषणम्। एवं विलोक्य तद्रूपम् विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय। ततः संहृत्य तद्रूपम् दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी। शरच्चन्द्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकाम् शङ्खचक्र गदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् योगीन्द्र वृन्द सम्बन्ध्यम् सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम्। दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम्। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम्। छिन्दी हृत संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धौ कृतशेखरम् त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकम् भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम् द्वीपीचर्माम्बरधरम् नागेन्द्रौतुतभूषणम्। एवं विलोक्य तद्रूपम्
विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चंद्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकाम् शंख चक्र गदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् योगीन्द्र वृन्द सम्बन्ध्यम् सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दी हृत संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरम् त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकम् भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम् द्वीपे चर्माम्बरधरम् नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चंद्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकाम् शंख चक्र गदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् योगीन्द्र वृन्द सम्बन्ध्यम् सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच
ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दित संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपासनातनी। शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकां शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दित संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपासनातनी। शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकां शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं
योगीन्द्र वृंद संबंध्यम सुचारु चरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरो मुखम् दृष्टा तदेतत् परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नीत्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम्। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दी यत् संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम् द्वीपी चर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी। शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकां शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् योगीन्द्र वृंद संबंध्यम सुचारु चरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरो मुखम् दृष्टा तदेतत् परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नीत्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम्। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दी यत् संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं
भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रौतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चंद्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकां शंख चक्र गदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्द सम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दी हृत संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रौतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चंद्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकां शंख चक्र गदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्द सम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं
मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दी यत् संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरम् त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकम् भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम् द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकाम् शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यम् सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दी यत् संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरम् त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकम् भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम् द्वीपीचर्माम्बरधरम् नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ
विश्वरूपा सनातनी शरच्चंद्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकां शंख चक्र गदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् योगीन्द्र वृन्द सम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। श्री हिमालय उवाच मातास्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशी प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्दित संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरम् त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकम् भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम् द्वीपे चर्माम्बरधरम् नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत प्रत्यया ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन् मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चंद्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकां शंख चक्र गदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् योगीन्द्र वृन्द सम्बन्ध्यम् सुचारुचरणाम्बुजम् सर्वतः पाणिपादं च सर्वतो शिशिरोमुखम् दृष्टा तदेतत्परं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः।